During the cadre preference, they said put IRS above IPS because IPS is a field job, you would not be able to give that much time. किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो नेचुरल रिएक्शन होता था कि मैं अपनी चॉइस को क्वेश्चन करने लगती थी कि मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर ली है यूपीएससी पिक ऑन करने में. I did 7 months of preparation. I was not aware of the basic book. Hello friends, welcome to the Thastu family. So today we have Ashna Chaudhary with us and she is rank 116. Very beautiful lady and of course very talented. So Ashna, we congratulate you and welcome you to the Thastu. Thank you so much, ma'am. Means a lot to me. So tell me, tell me something about your journey. All right, ma'am. My journey started, I wouldn't say my journey started back in 2019. However, my journey started from the day my parents started encouraging me during the school level itself. So at the school level, they would always encourage me to do good in life, to educate myself and how important the education is. My mother is highly educated. My father is a PhD in itself and is also a professor. So education, I would say, runs in the veins. And they also know the importance of education and how much you can achieve by educating yourself. So that was the preparation of me getting into academics, me trying harder in life. And later on, from 2019, yes, an active preparation towards civil services started. Took me 3 years for me to reach here, and I'm glad it has ended in a very positive way. Oh, very, very positive. Yeah, yes. अच्छा ये बताएं, अक्सर ऐसा होता होगा ना कि जैसे हापुड़ से आप हैं तो लोगों को बताना पड़ता है प्रॉपर हापुड़ से या कहीं और से? मैम, मैं हापुड़ में एक टाउन आता है पिलखुआ, मैं वहाँ से हूँ. तो जब आप लोगों को बताते होंगे कि मैं पिलखुआ से हूँ तो लोग पहचान लेते हैं कि कहाँ से या बताना पड़ता है थोड़ा? बिल्कुल बताना पड़ता है मैम. तो जनरली मैं जिन नए लोगों को मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम गाजियाबाद. And because that is the nearest big city. So I say I'm from Ghaziabad, and if they ask me in detail where exactly in Ghaziabad, I say it's on the outskirts. So I do not know whether people would be able to recognize the place, or even if I say Pilakhua, people won't be able to remember it. So I mean, then yes, I will. Now you should, क्योंकि अब आपने पिलखुआ को फेमस करना है. हाँ जी, बिल्कुल. ने सिलेक्शन ले लिया. हाँ जी. तो जैसे जब आप स्कूल में थे, है ना, तो एजुकेशन के प्रति ओरिएंटेशन आपका था. उसमें से कितना रोल आपको लगता है कि आपकी मदर का रहा होगा? क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं ना कि एजुकेटेड मदर्स आर रियल रीइंफोर्सर्स ऑफ एजुकेशन. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल मैम, मेरे साथ ये हुआ है क्योंकि माय मदर she knows a lot of languages. However, she has I don't know, like in bringing us up, she has left that talent of hers. Or so she would know Russian, she would know English, she would know a few other languages as well. But I don't know if she would be able to speak them now because वो fluency चली जाती है when you are not in touch anymore. So she sacrificed a lot as well. उसके बाद I would say she has done her master's, she's done her B.Ed as well. B.Ed, so she has a formal training in education itself. So B.Ed is a course that you do for teaching. So she has a degree for that as well. And but she decided to give up her career to make ours. And I believe that wherever I'm standing today, she has a great role in that. She was always interested in what I'm doing till my master's level itself. So my decision to take up masters in international relations has actually been shaped by her. When I decided to prepare for UPSC, initially I began with a mindset that I would want to go into the foreign services, and that's when my mom said, if you want to go into the services, are you even specialized for that? And so she was the one who put it into my mind that I should do my master's in international relations. So all throughout my choices, my decisions related to education, I would say have been influenced by her in a great manner. Oh, lovely. And mothers have that influence. मुझे भी याद है कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो हमेशा ना मम्मी मुझसे पूछती रहती थी, इतनी पढ़ाई करनी है ना, तो उसका कोई क्वांटम तो होता नहीं है. यस मैम. लेकिन ठीक है, उनका ये क्वेश्चन ना हर बार ऐसा लगता था कि हाँ करनी है ना. वो अकाउंटेबिलिटी की तरह उन्होंने यूज किया कि आप अकाउंटेबल हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है. तो वो शायद लाइन जो है ना वो इतनी ज्यादा लगने लगती है, अच्छा हाँ करनी है, मतलब है ना, फिर आप अपने आप से पूछने लगते हो कि करनी है, कितनी करनी है. तो वो डेफिनेटली मदर्स का तो रोल हमारी सक्सेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना, इट्स अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं किया जा सकता. ट्रू मैम. अच्छा ये बताएं, जैसे आप पिलखुआ से थे, लेकिन यार रियल बताऊं, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, आई फेल्ट यू आर फ्रॉम दिल्ली और सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, अ वेरी पॉलिश्ड लेडी, है ना, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल बट वेरी पॉलिश्ड. तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं. तो ये कैसे, मतलब ये पिलखुआ के सब लोग ऐसे हैं या? आई वुड से मैम उसमें थोड़ा स्ट्रगल गया है बिकॉज मेरी जो इनिशियल एजुकेशन हुई थी वो पिलखुआ में हुई थी, दो इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल. सो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन टू पुट मी इन अ कॉन्वेंट स्कूल सो दैट माई इंग्लिश गेट्स बेटर और देर इज अ डिसिप्लिन लाइफ दैट आई एम अबाउट टू लिव बिकॉज दे आर वेरी द डिसिप्लिन इज द मेन फोकस इन सच स्कूल. सो वो डिसीजन जो उनका रहा है शायद उसने एक तरह से मुझे एक फर्म ग्राउंड दिया है. फिर उसके बाद दे हैव ऑल्सो अलाउड मी और गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी
study outside. I went to Udaipur for my studies for 2 years. Then I came back and they put me in a, they realized that now the trend is such that CBSE education is more relevant to you picking up skills. So at that point, whenever the moment they realized this, they also decided to put me in a CBSE school, because at that point, I'm not the earning member. I do not have a say. I have a say in where I would be granted education, but I would say I do not have a bandwidth to counter their decision as much. And that is the point when they decided that DPS would be a better school for you, and it's a well-recognized school and a well-recognized society as well. So that's when they put me in DPS. So all their choices of the educational institutions and my accountability towards them, because they were providing me the best of opportunities. I would say I was the first girl who was sent outside the town on a daily basis in a private cab to take studies to a place which was around 45 to 50 minutes away from the house. I was the first one, and that was the opportunity I was provided. And I felt accountable कि if I'm being provided such opportunities, I better turn out good. So मुझ पे इतना विश्वास है तो करके दिखाना बिल्कुल पड़ेगा। मैम। तो आई वुड से कि ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है। फिर आई गॉट इनटू LSR which is known for polishing students for। तो ये LSR इफेक्ट है क्या? LSR इफेक्ट भी काफी हद तक है। मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि जब कि भी जैसे ऐसा होता है ना, फॉरेन रिटर्न एक हाईली पॉलिश्ड कॉन्वेंट एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे सच में नहीं लगा था कि कि आप एक स्मॉल टाउन से, ऐसा मेरे साथ हुआ है या बाकियों के साथ भी होता है? काफी लोगों के साथ होता है। तो I mean, in India, they always think I'm from South Delhi. I was born and brought up in South Delhi. So a few friends also make fun of it. नहीं तो मतलब LSR has really good polishing skills है। तो पर आपने कोप कैसे किया? मतलब फिर भी बहुत डिफिकल्ट होता होगा कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एंड देन वो LSR का कल्चर भी शायद कुछ अलग होता है। Yes, ma'am. But I would say कि LSR, more than a college, I would call it a community. So it's more like a community of young women who are trying to rise up in society, who are trying to take what is due for them and claim their own space. And I believe कि बहुत cooperative environment है LSR में. Competition is a little reduced, जो हमारे school level तक mostly रहता है कि how much am I scoring, which position am I getting in school. So वो काफ़ी tone down हो गया था LSR में. और एक community की तरह हमें support किया गया कि all right, you're all one, you are together and you should cooperate and move forward in life. So वो एक काफ़ी जो safe environment है वो हमें LSR ने provide कराया, बहुत cooperation से वहाँ पर education हुई। तो so I would say कि yes, LSR provides you a space wherein you can thrive. Notions of womanhood might also have changed over time. Yes, ma'am. And so I feel that especially the education for women changes a lot of things. So what happened with you? So when you started your journey, like so from Pilakua to LSR and now as a civil servant, how your understanding of womanhood has changed? My understanding of womanhood, I would say, has been very crude during the initial levels when I was in school. We did not think much about what is politically right or wrong regarding gender. So gender has been one topic that was taken very casually. If at the school level as well, like a teacher would come and casually say, all right, girls will sit with girls, boys will sit with boys. So this was a perception, like you should have friends who are girls who are the same gender as you, and you should not be friends with the opposite gender people. So gender in that manner was started as a fixity for me. All right, I belong to this gender. I should perform all the roles of this gender. But as I grew up, I realized it is a social construct, especially at the college level when you are actively taught about these things. I would say as I grew up, I realized, all right, it is a social construct and there are no labels attached to a gender that this is how you are required to perform. You can actually perform in a way that goes in contrast with your gender. For instance, the service that I am expecting as of now, police service. I mean, for women, this service, I would say, a lot of people want me about it. Ki, all right, skip it altogether. Do not fill IPS during the cadre preference. They said put IRS above IPS because IPS is a field job. You would not be able to give that much time. But I would say I really have a regard for the service, and I believe there is nothing that women can't do. That yes, need both police officers, yes, female police officers rather, to have that sensitivity, to have another face of our police, which is very much required. So and we all know that maybe the crime against women will decrease, maybe the sensitivity of police towards women will increase with female officers, and that happens. That really happens. Very right. You rightly said that with education, our notions change of womanhood. And things which we take for granted, जैसे कि हमें चाय बनानी है या
भाई को ये करना है। Yes, ma'am. वो नोशंस जो है धीरे धीरे चेंज होते हैं, और कई बार सोसाइटी उसको ये नाम भी दे देती है कि पढ़ लिख के लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है। True, that happens a lot. और इतनी पढ़ लिख ली है, अब इसको लड़के कैसे मिलेंगे? तो you won't find a good match because there is a perception that the guy should be more educated than you are. So ये हुआ है क्या, किसी ने बोला है क्या अभी? बिल्कुल ये मेरे जब मैंने मास्टर्स करनी शुरू की थी तब बहुत जोवियल मैनर में, मजाक के मैनर में एक रिलेटिव ने बोला कि कितना पढ़ेगी, अब रुक जा तेरे लिए लड़के भी नहीं मिलेंगे। और यही नोशन किसने बनाया कि हस्बैंड शुड ऑलवेज बी मोर अर्निंग, मोर एजुकेटेड, क्यों? ओके, तो जब आप जैसे आपने एलएसआर से अपना कोर्स किया, हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? व्हाट केम इनटू योर माइंड? ऑल राइट मैम, सो ये हुआ आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं तुरंत मास्टर्स नहीं करूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट माइंड सेट कि, और आई डिड नॉट थिंक आई वॉज केपेबल इनफ टू टेक अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स एकदम से। सो आई थॉट कि आई वुड रादर स्टडी अ लिटिल बिट एंड वुड फाइंड आउट व्हाट इज माई कॉलिंग and then would start pursuing masters after a gap of 1 year. I was sure I will pursue my masters, I will pursue my higher studies, बस एक थोड़ा सा टाइम में मैं शिफ्ट ला रही थी क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा और अपने होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करना था बिफोर टेकिंग अप एनी अदर कोर्स, बीइंग स्टक विद इट फॉर 2 years एंड देन क्योंकि बहुत अभी तक अकेडमिक्स मेरी लाइफ में एक सेंटर रोल प्ले कर रहा था। तो उसमें मैंने थोड़े से एवेन्यूज़ अपने लिए, डाइवर्स एवेन्यूज़ देखने शुरू किए। मैंने कॉर्पोरेट में देखा, फिर रियलाइज़ हुआ नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, एंड देन बहुत कैजुअली मैंने सोचा कॉर्पोरेट के अलावा क्या है, देयर इज गवर्नमेंट सर्विस, चलो उठाते हैं देखते हैं ये क्या है, एंड दैट्स हाउ आई स्किम थ्रू द सिलेबस स्किम थ्रू किया। मुझे लगा ऑलराइट आई कैन डू दिस। ह्यूमैनिटीज़ मेरी रही है स्ट्रीम, और हिस्ट्री एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स दे आर वेरी क्लोज टू मी। आई कीप रीडिंग अबाउट दैट, और मेरे को कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं लगा जो बहुत ही अलग था, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में। सो आई थॉट कि हाँ ये तो आई कैन डू दिस। सो आई थिंक दैट बिगैन विद आई कैन डू दिस टू दिस बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो मेरा सिलेबस के साथ आफ्टर सिलेबस स्किम थ्रू तो मैंने कर लिया था, बट व्हेन आई गेव इट द फर्स्ट रीड आई रियलाइज्ड ओके इट इज़ नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट ईजी। दिस इज टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियलिटीज, दिस इज मेकिंग मी अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मुझे तो मतलब मैं अभी तक एक बबल में थी, बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ ऑपरेट कर रही थी। देयर इज सो मच टू लर्न इन द वर्ल्ड एंड देयर इज सो मच यू कैन डू अबाउट इट। सो दैट्स हाउ माई परसेप्शन स्टार्टेड चेंजिंग, and till the time I completed it, I was totally devoted to the services. This is also my personal experience that the education of UPSC, it is so enlightening, and I don't know why I think it should be made compulsory. एक कॉमन ग्रेजुएशन कर दो जिसमें यूपीएससी पढ़ाई जाए, क्योंकि इतना दिमाग खुलता है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो। मतलब आई डोंट नो दिस मच नॉलेज कैन इट बी गिवन बाय ओनली लाइक एनी अदर ग्रेजुएशन? And UPSC especially focuses on environment and ecology a lot, and which I believe should be done. Ethics as well, yes. What to do and what not to do, kind of that knowledge. आपने गलत किया, आपको पता था फिर गलत किया, that insight that develops through education, very very different. तो जैसे मतलब जब आपने यूपीएससी के बारे में पता कर लिया and you started your preparation, so how did you feel fearful about it कि ये इतना सारा है सिलेबस, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या आपको लगा कि नहीं मेहनत करूँगी तो हो जाएगा? ये मैम मुझे दोनों ही लगे एट टाइम्स। तो जब मुझे एकदम से एक फेलियर फील होती थी या एकदम से एक सेटबैक होता था, किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, तो नेचुरल रिएक्शन होता था कि मैं अपनी चॉइस को क्वेश्चन करने लगती थी कि मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर लिया यूपीएससी पिक ऑन करने में, क्या पता मैं कभी क्लियर ही ना कर पाऊँ इसको, इतना वाइड सिलेबस है, यू आर रीडिंग एवरीथिंग एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई एज वेल। आप कितना भी बोलें कि ये क्लासीफाई कर ईजी हो जाता है, बट हर चीज़ आप क्लासीफाई कर एक हेड के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो वो होता था मेरे साथ भी, बट then I would get reminded of the larger goal that I'm thinking about, and that would give me the spirit to sit back again and prepare again from scratch. That means persistent. So what was this is your third attempt? Yes, ma'am. So what was your mindset during your first 2 attempts, and what was the result? During my first 2 attempts, especially the first attempt, so I gave my first attempt wherein I did not have my optional prepared. I did not have my optional decided even. Oh, I thought they asked, when you fill the form, they ask for a choice for optional, and I casually put English literature because I read it during my graduation. I thought कि चलो ठीक है, थोड़ा similarity होगी, I would be able to cover it, prelims हो जाए. So I did not have an optional during my first attempt. I was taking it very casually. I did 7 months of preparation. I was not aware of the basic books. I got to know about spectrum for modern India after 7 months of preparation. I got to know Lakshmikant bhi aati hai. Till then I was reading the Bear Act. I was reading that bulky constitution ka original version entirely, and I was facing, and as